जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत 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 बढ़िया होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट हम लोग शर्म फील करते हैं और हम इस बात को जो है डिस्कस नहीं करते हैं। और ये चीजें डिस्कस करने वाली होती हैं। एक ना हर एक की लाइफ में ये इम्पैक्ट लाती है और इम्पैक्ट लाती है। डॉक्टर जाकिर नाइक जी की वीडियो है एंड वीडियो होने वाली है मास्टरबेशन इज नॉट प्रोहिबिटेड नॉट हराम। कि जो हस्त मैथुन होता है वो प्रोहिबिटेड नहीं है, इस्लाम में हराम नहीं है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए आप पे अपने पे डिपेंड करता है। बट डॉक्टर जाकिर नाइक जी क्या कहते हैं इस बारे में? खुद साइंटिस्ट है, डॉक्टर है ना, डॉक्टर है तो उनको पता होगा, मेडिकल डॉक्टर है वो। एंड दूसरी चीज ये है कि वो कुरान से भी रिलेटेड में भी बता सकते हैं, कुरान में भी इस चीज का जिक्र हो। तो देखते हैं क्या चीज बताते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके लिए भी है, हमारे लिए भी। हम मना नहीं करते, हमारे लिए नहीं, सभी के लिए भाई इंपॉर्टेंट। सो फिलहाल इस वीडियो को प्ले करते हैं। Depends upon you. According to me, I being a medical doctor, that in our medical college when I did my medicine, they used to say that when you ask a person, do you masturbate? 99% will say yes. And the remaining 1%, they are lying. Anyway, this is just a joke. It's amongst the medical students. It's not a fact. But according to research, today research tells us that amongst the males, 95% masturbate. Yeah. Amongst the females, approximately 80% masturbate. I'm not saying that it is normal to masturbate, but it is very common. And there is a myth that which is there if you go to some of the Islamic sites, and those who believe it's haram, they say that masturbation causes blindness, masturbation, it causes nervous problem, weakness. All these things are a myth. In no way does masturbation cause blindness. In no way does it cause a nervous problem. Yes, if you do excessive masturbation, there can be certain problem, that is excessive masturbation. Yeah. And even medical science tells us if you do excessive sexual intercourse with your wife, maybe 10 times a day, even that. क्योंकि हम कोई भी चीज करते हैं, अगर हम ज्यादा करेंगे तो वो हमें इफेक्ट डालेगा ही डालेगा ना। चाहे वो खाने की चीज हो, चाहे कुछ पीने की चीज हो, ओवर करेंगे तो वो चीज इफेक्ट करेगी। सही बात है, ओवर द चीज कोई भी हो वो इफेक्ट करती है भाई। वो चाहे कुछ भी चीज हो, आप सभी को पता ही है, वो पानी के अलावा will cause problem. So excessive anything or excessive most of the things will cause you problem. But normal masturbation medically doesn't cause any problem. If you do masturbation according to medical science, it is normal. If you don't do also, it is normal. But the majority of the people are involved in masturbation. But I'm not saying it is the norm, but I'm saying that majority people do it. So based on what the scholars say and what medical science says, I agree more with the second group of scholars, and I would say that masturbation is makruh. It is discouraged. To make anything haram, you require a strong evidence from the Quran or from Sahih Hadith. And there is no evidence whatsoever. The verse of the Quran, I do agree with the second group of scholars. For example, Ahmad ibn Hanbal, may Allah be pleased with him, and the other group of scholars, Ibn Abbas, may Allah be pleased with him. I believe with Ibn Abbas' call that it is not haram. And this verse of Surah Mu'minun, chapter number 23, verse number 5 to 7, does not include masturbation. It's not prohibited. It is restricted to sexual intercourse. Okay. And I put it because there's no evidence. It will either come in the mubah. I put in the makruh because I agree with the call of Ibn Hazm that it is not the act of nobility. But because majority of the human beings are involved in it, and there is no evidence from the Quran and the Sunnah to prohibit it, I put in the makruh category. Everything the majority do is not correct. For example, today, according to research, 95% of the women in the Western countries, before they pass the university, they're involved in zina. That does not make zina halal, not at all. The Quran is very clear cut in Surah Isra, chapter 17, verse number 32, that zina is prohibited, it is haram. Majority do doesn't give it a sanction to make it halal, but if there is no text in the Quran or Sahih Hadith prohibiting it, it becomes mubah. I put it into the makruh category for various reasons. What are the reasons? It's not the act of the noble people. Number two, that excessive masturbation is haram. It can cause problems, it can cause health problems, it can cause psychological problems, and most of the time, masturbation is associated with haram activities. Most of the time, masturbation is associated with pornography. Whether you're watching a blue film or a pornographic film, or you're watching obscene photographs, images,
here itself, if it associated with haram activity, that again becomes haram. So if you associate masturbation with pornography or with obscene photographs, it is haram, and that is prohibited, and it leads to that high chances. That's the reason I would say that best is to avoid. But if you cannot marry for various reasons that we have, so the best would be you fast, as was recommended by beloved Prophet in Sahih Bukhari, volume number 7, hadith number 5066, that, O young people, whoever has the means to get married, they should get married. For it will help you to lower your gaze and guard your modesty. And if you cannot marry, then you fast, it will reduce sexual urge. And this is scientifically proven that if you fast, it reduces your urge of your sexual desires. So the best is to fast. But it will not be possible to fast always, and depending upon the levels of sexual urge, that keeps on differing. So based on this, the mustahab is to fast. But if you cannot, or if that's not sufficient to suppress your desire, and if you have to masturbate, it is permitted. It is not a sin. There is no evidence anywhere in the Quran or Sahih Hadith which says that if you masturbate, you get a punishment. ओके गाइस, ये वीडियो थी, एंड इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मिली है आई थिंक वो हर एक बंदे तक पहुंचनी चाहिए. अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो अपने आसपास के लोगों को भी ये वीडियो दिखाएं, है ना. उन्होंने कहा है कि कहीं भी नहीं लिखा है. हम लोग मतलब कि मिथ था, हम सब सुनते थे ना इस चीज़ को कि मास्टरबेशन से जो है आपको बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स आती है ना. कोई कहता है वीकनेस आती है. अब ये वीकनेस वाला फैक्टर कहीं ना कहीं सच भी लगता है और मिथ भी लगता है ना इस चीज के रिलेटेड. बट उन्होंने तो इस चीज को मना करा है कि कोई मेडिकल वो आता नहीं है. लेकिन अगर आप ज्यादा ही करते हो, ओवर करते हो, फिर तो आपको एक्सेस में भाई कोई भी चीज करोगे वो डैमेज करेगी, ये करेगी. हर चीज लिमिट में करनी चाहिए. तभी कहते हैं कोई भी चीज, अब पानी का भी कहते हैं पानी खुला ज्यादा पीना चाहिए. अब बंदा पीता रहा कुछ ना कुछ उसका भी डिसएडवांटेज होता है. अगर हमें फायदा दे रहा है 99%, तो 1% कुछ ना कुछ वो भी चीज गलत हो ही रही होगी पानी के साथ भी. एंड खाने से रिलेटेड या दूध पीने से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी चीज है उसको आप लिमिट में रह के करनी चाहिए हर एक चीज. तो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो. होप्स आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा. ये भी चीज कही है कि अगर आप मैरिड नहीं हो तो फिर आप फास्ट कर सकते हो, फास्ट रख सकते हो, तो उससे आपको है ना वो कम. सही बात है, फास्ट तो रखना चाहिए भाई. फास्ट ना एक बॉडी को रिलैक्स करता है, स्ट्रेस बड़ा ज्यादा दूर करता है, और बहुत बेनिफिट होते हैं भाई फास्ट रखने के. हफ्ते में एक दिन फास्ट होना चाहिए. मेरा तो वैसे डेली होता है, सुबह खाना खाया या कई बार नहीं खाया, फिर रात को खाया. सो बाकी तो फिलहाल ये वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.